Welcome, guys. Welcome to Community Monday Meetup, South Asia. So आज हिंदी में ही करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो आज मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप हिंदी और उर्दू समझ सकते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अप्रैल 18 है, मंडे है, तो हैप्पी मंडे। आज हमारा मंडे मीटअप होने जा रहा है और स्टार्ट भी हो चुका है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कस करना चाहूँगा टॉप कोडर डेवलपर सेंटर आइडिया जनरेशन चैलेंज के बारे में। एक्चुअली हमारे टीम के इंटरनली ही ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ है, जिसमें मतलब एक डेवलपर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, क्योंकि जो टीम काम कर रही है इस पर, वो मतलब मैं उस टीम में नहीं हूँ। तो लेकिन इसका चैलेंज अभी एडिएशन चालू, आई मीन एडिएशन चालू है, उसका एडिएशन वाला पार्ट चालू है अभी, मतलब उसमें रिसर्च करना, डिज़ाइन करना। तो एक पार्ट जो है उसको कम्युनिटी के साथ शेयर किया गया है कि आप लोग भी हेल्प कर सकें आइडिया जनरेट करने के लिए। तो अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो मेरे पास लिंक है कि नहीं मुझे देखना होगा, और अगर लिंक ना भी मिले यहाँ पर तो आप वही topcoder.com/ हाँ ये है, ठीक है। तो आप वैसे अगर कोई भी चैलेंज का लिंक चाहिए तो आप जा सकते हैं topcoder.com/challenges पे, तो वहाँ जा करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। और उसमें वैसे टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, अराउंड 1-2 दिन बचा है। तो अ, अगर फिर भी अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, इतने कम टाइम पे अगर जनरेट हो सकता है आइडिया, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन अगर किसी के पास है टाइम कर सकते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं इसमें। या आप जनरली देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। अगर कोई सबमिट नहीं भी कर पाए तो आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, और अलग से भी कुछ आइडियाज़ देना है तो जो को पायलट है उसको बाद में भी सेंड कर सकते हैं। वो आप कुछ जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आइडियाज़ में। तो नेक्स्ट है ये H2O प्राइजेस। तो टॉप कोडर ने एक्चुअली मतलब वाटर पावर ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए एक टाई अप किया है किसी कंपनी से। तो ये लोग चैलेंजेस रन कर रहे हैं, ये मशीन लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन चैलेंजेस होंगे। मुझे लगता है ये मोस्टली पाइथन चैलेंजेस वगैरह है, मतलब तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो शायद ये 2 चैलेंजेस है, एक ये है और एक ये इसका होम पेज है शायद। मतलब आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर ज़्यादा आइडिया चाहिए तो आप यहाँ पे आके उसके बारे में सीख सकते हो। और इन केस और आप चैलेंज में compete करना चाहते हो तो ये है लिंक। इसमें बेसिकली वही है कि हाँ, अच्छा, ये एक्चुअली यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है, जो अमेरिका की एक्चुअली एक मिनिस्ट्री है बेसिकली, तो उसका प्रोजेक्ट है ये। तो काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट है एक तरीके से। अच्छा अच्छा, इसमें एक्चुअली यूएस सिटीजन होना कंपलसरी है, नॉन यूएस सिटीजन अलाउड नहीं है शायद। अच्छा, तो उस सेंस में तो हमारे लिए रिलेवेंट है नहीं, तो एक्चुअली मुझे इंक्लूड करना नहीं चाहिए था इसको। तो एक्चुअली अगर आप साउथ एशिया रीजन से, तो अनलेस आप अमेरिकन सिटीजन ना हो, जैसे बहुत लोग हो सकते हैं कि अमेरिकन सिटीजन हो लेकिन इधर रहते हो, तो आप कम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप इसमें कम्पीट। आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये है हमारा टॉप कोडर स्किल बिल्डर चैलेंज, और ये ब्लॉकचेन पे है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल क्रिप्टो का ज़माना है, जैसे ब्लॉक ये आपका बिटकॉइन, डोज कॉइन, ये सब काफ़ी अभी पॉपुलर है, और बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आजकल। तो इन सब का अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो ब्लॉकचेन का मेन सबसे बड़ा मतलब यही रहता है, मतलब प्लस पॉइंट यही है शायद, कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है। और उसमें एक और चीज़ है कि आप जल्दी कोई डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो उसमें होता है और उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म होता है बेसिकली, कि जैसे बहुत लोगों को किसी चीज़ पे अग्री करना पड़ता है तब जाके कुछ होता है। तो एक तरीके का क्रिप्टोग्राफिक मतलब एक क्या बोलते हैं मतलब एक प्रोसीजर था,
जो अभी इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है, और अभी जैसे क्रिप्टो करेंसीज और बहुत सारे मतलब इसमें टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में लर्न करना चाहते हो, या आप इस पे मतलब इसको मतलब इस पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो कुछ किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करके, तो आप डेफिनेटली आकर के इस पे कम्पीट कर सकते हो। और एक एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आप टॉप कोडर पे भी थोड़ा अक्वेंट होना चाहते हो, तो आप स्किल बिल्डर्स चैलेंज करके आपको एक जनरल आइडिया जरूर हो जाएगा, मतलब कि टॉप कोडर में चैलेंजेस कैसे काम करते हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा स्टेज 4 स्टार्ट हो चुका है टीसीओ में। तो अगर जैसे बहुत लोग किसी एक स्टेज स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं, जैसे उसके बाद वो लोग मेहनत करना स्टार्ट करते हैं उसमें। ऐसा भी होता है, जैसे मैंने भी ऐसे किया है कि जैसे टारगेट है कि जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 जिसमें भी अगर लग रहा है कि नहीं इस महीने में फ्री रहूंगा थोड़ा, तो मेहनत करूंगा इस महीने में। तो बहुत लोग किसी पर्टिकुलर स्टेज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अभी जैसे अगर आप वेट कर रहे थे, तो अभी आ गया है, 4th स्टेज स्टार्ट हो गया है अप्रैल में। तो अगर अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, मतलब ये अप्रैल मई जून मतलब बाकी है पूरा, तो आप कंप्लीट कर सकते हो और पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर आप पॉइंट्स टेबल में आप जहाँ भी आओगे अकॉर्डिंगली आप क्वालिफाई करोगे। तो अगर आपको उसके बारे में लर्न करना है, तो आप यहाँ आ सकते हो। अच्छा, कृष्णा मूर्ति जी आ रहे हैं, तो शायद उनके भी इंग्लिश में बात करना पड़े। या हेलो कृष्णा। So, by the way, like, are you able to understand Hindi, or should I switch to English, Krishna? I suppose you can either like respond via chat, or what I'll do, I just continue English just in case you don't understand Hindi. I'll continue in English. Okay. Okay. Okay, so I discussed about the TCO stage 4 that it has started in April. So in case you are looking forward to a new stage starting, it has started now. So now is a good opportunity to actually get into if you wanted to start competing in Top Coder, or if you had taken a break, now would be a good time to like restart again. As you would have like 2.5 months to actually like gather your points and maybe get a chance to qualify for TCO. So yeah, so I've shared the links over here. So in case you want to explore, you can go here. When people who are watching this on YouTube, so the link is tco22 dot topcoders.com. Okay, so that's the link. Okay, so next is our Hangout Friday. So I don't yet have a link with me right now, but it will be hosted in a couple of days on April 22nd. So this is basically like a fun event. This is not like anything serious, or any competition of any sort. But yeah, there are some games if you want to like come and like play around for free. There's no like there are no charges, of course, and like many of us will be present here. So the timing will be April 22nd on like this year, and the time is 10 a.m. UTC -4. So it's obviously in the evening, like sometime around now, like in a few hours, maybe like around 7 p.m. or so. Uh, so you can join and we can have fun with it. Okay, and once I have the link, we'll definitely share it on Slack. So yeah. Okay, now moving on to like there's going to be a Docker 101 for Topcoder. Okay, so this is going to be an event that is hosted by Pena. So what he's going to do is he's going to like introduce Docker to people who actually don't regularly work on it. Okay, so for instance, if you like compete on in data science challenges, so many a times they require you to package your solution into a Docker package. So what happens is if you are not acquainted with it, you can definitely like read on your own. But to help you in that journey, so Topcoder will be doing like a meetup which will cover the basics. And if you have any questions or any follow-ups, you can just ask the presenter. So the presentation will be done by Penna, who is also a community manager like myself. So he'll be doing the presentation. So you can catch it up on the time is same. It's 10 a.m. UTC -4, and it's on April 26th. Okay. So about a week from now, you can attend this event.
Okay, so I'm moving on to like top gigs this week. So yeah, so apart from I mean the challenges, uh, Topcoder also has gigs. So this actually is like a pretty unique kind of an offering, and like we didn't have anything of this sort previously at Topcoder. Like previously, we only used to have like challenges, but now we also have like gigs. So in gigs, what happens is that you actually get a chance to like get sort of like a mini job. It's not really like a mini job, but the duration is not like a full time role. So if you're a kind of person who's not looking for a full time role, but if you want to be engaged with a company for like semi long term, like a few months, and many a times they actually extend as well. If they like your work, maybe they can extend your uh, duration as well. So that happens. So all you need to do is come here. It's topcoder.com/gigs. And once you come here, uh, you can basically just browse through it. Okay. Uh, and normally it is like sorted by recency, but I'm not exactly sure if it's sorted like that. And if you want to like look for any particular skills like Angular, you can search for it and then you'll find those over here. Okay. Let's go through one. So let's say I go through this and so you see the compensation mentioned here. And the primary things that you also need to pay some attention on is the working hours. Like for this one, it is GMT, so Greenwich Mean Time. That should be like UK time. So you need to be sure that you are available during those time. Those timings. And many a times they also have like restrictions as in where you can be from. So in this, I don't see a restriction as such. Uh, and in terms of your skills, you need to be sure that you have these skills because like this is going to be like top coder is sent like recommending you to the company. So you need to be sure that you actually have these skills. Uh, uh, because in challenges, what you can do is you can basically learn along as you compete. So as long as you manage to win the challenge, you are done. But this being a long-term commitment, and you need to actually work with the company. There needs to be at least some professionalism, and you need to be like serious with the work. You can't like give up midway, and you also need to be sure that you do have these skills. Okay, and uh, and the other thing is that you need to write these skills and why and how do you have these skills very clearly in your resume to be considered seriously. Because many a times what happens is like people have a couple of skills in this and they don't have other skills, during the interview it gets discovered, and because of that the overall timing to close a gig actually like elongates. So it's better to like mention it very clearly, like how which skills you have, which you don't have, and how do you have those skills. Like was it a like a real like corporate experience, or did you acquire it on top coder? Like if you have any top coder history to support that, things of that sort. So yeah. So, so yeah, I mean, you can just come to topcoder.com gigs and you can find whatever you need over here. Okay. So I don't see any new challenges compared to, gigs compared to those that were mentioned last week. So I'm not going to like recommend a few because most of them are the same. I'll just inform how to like you can filter by location, you can sort by different parameters, and you can explore on your own. And yeah, and to be notified about new gig listings or modifications to existing gigs, you can actually come to Discord. And in Discord, we have a section dedicated to gigs. And if you follow that, whenever there is a new listing, you'll get a notification for that. So that way you'll actually keep track of everything. And if something comes up that you might think that suits you, you can definitely apply. And don't like if you are on the edge and if you're not sure whether you should apply or not, you can always get in touch with actually like Corey. Corey like is usually pretty easily available on Discord, so you can find her. Or if you want to ask any question and if you can't find anyone, you can just join me on the next gig. I mean the next meetup, and I'll try to convey your like grievance or your question to the concerned people. Okay. Okay. So this is our last slide. So this is like these are the upcoming major events. Like this is definitely not exhaustive.
as in there are a lot more challenges going on at Topcoder right now. Like if you just go to topcoder.com/challenges, you'll be able to find a lot more challenges. But these are some of the primary events coming up, as in mostly competitive programming matches are mentioned here, and some meetups and presentations, etc. So I'll go through this pretty quickly. So the first one is the hydropower operations optimization challenge. So as I said, you need to be a US citizen, because this is a Department of Energy project, as in the American government's project. So they actually don't allow like contestants from other company to compete. I'm not exactly sure if they allow us to compete or not, or if we like non-citizens who won't be eligible for a prize. I'm not exactly sure about that, but I think you need to actually check the specification, or maybe ask in the forum. But the problem looks interesting. So the next one is April 13th to 28th. We have the marathon match 135. Okay, the timings are mentioned here. Then on 22nd, we have a Hangout Friday. So Hangout Friday, as I mentioned, is a fun event. It's not like nothing serious. We just come there and we just have fun. And like there are games, and people actually discuss things about themselves. Pictures are shared, as in I work from here. Look at my where I work, things like that, or any funny stuff and cool stuff. Those are shared over there. And then on 23rd, we have an SRM, that the SRM 828. And then on April 26th, we have the Docker 101 that I just talked about. Then on 27th, we have the TCO 22 algorithm round 1B. Okay. So this is this, like, unlike other tracks, the algorithm track actually has like dedicated qualification rounds. So this is going to be one of those on 27th. Then on 29th, we have the RDM 6. Okay. And followed by RDM 7 on May 6th. Okay, so RDM is rapid development match. So this is basically development match, as in software development match, but this is unlike the normal code challenges. Okay, so over here you actually compete for like the duration is limited. It is similar to how the matches are during TCO, and you actually get more or less score based on when you submitted, what order did you submit, as in were you the first, second, third. So it's a very interesting, the scoring mechanism is pretty interesting, and we actually took it directly from TCO scoring system. So pretty interesting for people who haven't been to TCO but want to get a feel of how the competitions are like. So this format is pretty interesting for those. And it also like finishes pretty quickly, so you don't have to like work for longer duration if you are not into like those kinds of challenges. And then on May 11th, we have SRM 829. And then on 11th, we have the rookie SRM 13. So SRM is single round match. This is a competitive programming format. So this is not a software development challenge per se, as in we don't actually build any software for any client or any real world use. It can be used for real world, but generally it is not. Like it is sort of like programming puzzle, and puzzle, it is code based on the memory efficiency and the time efficiency of it. So it's pretty technical in nature, but people who are interested in competitive programming definitely do check this out. So yeah, generally speaking, there are two formats in competitive programming. One is marathon match and one is SRM. But you need to be careful that in marathon matches, there can also be machine learning marathon matches, which is not competitive programming. So basically, it's a bit confusing, marathon matches, but otherwise, just remember that there are marathon matches and then there are SRMs. Okay, but if in case this doesn't concern you, you don't have to actually know about this, because generally speaking, people like myself, I'm actually interested in data science. I mean AI and software development. So I'm generally not very concerned about the SRMs in the marathon matches. Okay, unless it is a machine learning marathon match. So I hope you get the point. So yeah. So I think we're done today. So like I said, actually, like today is actually pretty like a different day for me, because I had some issues with my laptop. So I'm hosting it from a different location today. So yeah. So in case you have any questions, just let me know, or you can just ask it on the chat, or if you have a like a brief question, you can ask me directly, or maybe I'll end the call uh, early today. So
So yeah, just let me know if you have any questions. Yeah, I have a question, but I think yeah, you are disturbed today, so I will ask on the Discord. Okay, but just let me know what is the question. Like in case I have a short answer, I'll let you know, or maybe I'll ओके, yeah. हिंदी में अच्छे से समझा पाऊंगा जल्दी। ठीक है, लेकिन अगर एक हाँ, दो मिनट में समझा पाइएगा तो भी पूछेगा, ठीक है? अगर उससे ज्यादा एक लम मिनट। हाँ, एक मिनट से कम ही हो जाएगा। हाँ। एक्चुअली जब TCO 22 जब खोलते हैं पेज उसका, ठीक है, हम्म। तो वहाँ पे विनर्स लिस्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस में 100 टी-शर्ट के ऊपर 100 लिखा रहता है मार्क, ठीक है। बट हाँ, जैसे आप नीचे करो थोड़ा सा, हल्का सा हम्म। पेज नीचे करो। हम्म। हाँ, इधर है ना, ऊपर हम्म। ऊपर ऊपर, हाँ। हम्म। अब थोड़ा, हाँ, हाँ। तो वहां पे ना 100 टी-शर्ट्स लिखा रहता है, तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये 100 टी-शर्ट इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्या, जबकि इसमें क्वालिफाई तो बहुत कम ही लोग होते हैं। actually I am watching this for the first time as well because I don't know what this is. Just let me. हाँ, तो ये मुझे कंफ्यूजन है, इसका इसलिए कंफ्यूजन आया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर हम्म। मैं अभी डेवलपमेंट के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ, तो क्या मैं F2F के लिए क्वालिफाई मतलब मेरे को करना पड़ेगा, या अगर मैं वहां जाता हूँ तो मैं पार्ट ले सकता हूँ, मतलब वही नहीं, विदाउट। क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप जिसमें भी आप जैसे I'll answer in English, okay? So हम्म what happens is like for example you have qualified through the development track, right? हम्म। Yeah. So in case you want to qualify through, if you want to compete in the first to finish track as well, you'll actually need to qualify through that separately. It's not like anybody can compete in any track. You have to compete in your own track. So there are cases when some people actually qualify in multiple uh, because yeah, I think in the first one, I think somebody had qualified into. I think Thomas Kranitsas. He had actually qualified in both in first to finish and development. But you need to actually score the points in both. It's not like you can compete from one and also directly get qualified from the second. Okay, you get the point. समझ गए ओके ना? ओके, या मतलब या जिसमें मतलब आप जिसमें डेवलपमेंट में हो तो डेवलपमेंट में ही रहोगे। अगर आपको उसमें करना है तो आपको उसमें भी जीतना होगा फिर पूरा। वही होता है। तो बहुत लोग जैसे एक्चुअली, हाँ। हाँ, एक्चुअली ये 100, ये जो है ना 100 इंटू जो टी-शर्ट है, हाँ। उसके वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ कि अगर पार्टिसिपेट सिर्फ 12 लोग अगर सिर्फ वो करते हैं, मतलब हम्म। क्वालिफाई करते हैं, तो फिर ये 100 टी-शर्ट्स क्यों, ये Good, yeah, ऐसा। good. It's a pretty good question actually because even I don't know about this. Yeah, because only 12 people compete. So I think this could be for I'm not sure. Maybe this is given out randomly or maybe to the people who are present at the location maybe. So I think the best thing is maybe I'll ask this question on the TCO channel. Okay. ओके। Oh, I'll ask the question on the TCO channel on Slack. Sorry, हम्म Discord. Or you हम्म। can also ask over there, or maybe I'll just ask after this call. Okay. ओके ओके ओके। Okay. एंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए विंडो, मैक ओएस और लिनक्स तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर डीप लर्निंग करना है, अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू डीप लर्निंग, then हम्म in that case I think Mac, there are some issues over there. You'll have some issues with the installation, as हम्म। in PyTorch is not very well supported in Mac, in the new Mac chip. Okay, so ओके। you'll have some issues. Maybe it will be sorted out in like few months, but right now I think the best is um, I think Windows or Linux, you can like dual boot. Because I've tried both. Like initially, I used to use only Linux, but gradually I shifted to like Windows for machine learning related work. So everything works pretty well on Windows as well. So अच्छा, अगर 16 GB रैम i7 11th जनरेशन है hmm. और उसमें 6 GB ग्राफिक कार्ड भी है, तो ये वर्क करेगा अच्छे से एकदम। हाँ, छः, लेकिन कौन सा देखना होगा? मतलब GTX, मतलब आपको देखना होगा कि आर वो टी एक्स आर टी एक्स हाँ, 3060। RTX 3060 ठीक है, 3070 तक अगर हो तो और अच्छा है, लेकिन 3060 भी चलेगा वैसा। अगर आपको 2070 वगैरह मिल रहा है ना, 2070 या उससे पहले वाला 1080 वगैरह मिल रहा है, तो वो सब भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, बहुत दिन से मैं एक्चुअली देख नहीं रहा हूँ, लेकिन 3060 तो लेटेस्ट जनरेशन तो अच्छा ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये एक्चुअली लेटेस्ट जनरेशन है वो। हाँ, तो आप देख लीजिएगा, इस सबका बेंचमार्किंग दिया रहता है आजकल, उसका बेंचमार्किंग रहता है तो उसमें आपको स्कोर वगैरह भी निकाल के दिया हुआ रहता है।
ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो उसमें क्या है अच्छा। कि जैसे आप देख लीजिएगा कि अलग अलग गेम्स कैसा चलता है उसमें, तो जैसा गेम हुँ। चलेगा रफली जो आपका डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का काम है वो भी रफली सेम ही चलता है। वो जैसे गेम एक्चुअली अच्छा चलता है, एकदम फ्रेश चलता है, स्मूथ एकदम। तो आप खरीद लियो क्या आप भी? क्या, हाँ, मैंने लैपटॉप लिया एक्चुअली, रिसेंटली लिया था। हाँ तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था, लेकिन हाँ उसमें गेम जो है लाइक वो जो है पबजी वगैरह है, हाँ सीओडी है, हाँ ये सब एकदम स्मूथली चलता है, मतलब हाँ। कोई दिक्कत नहीं होता उसको चलने में। हम्म हाँ, और मैं उसमें यूनिटी भी रन करता हूँ, यूनिटी, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होता। हम्म और ये इलस्ट्रेटर वगैरह में भी दिक्कत नहीं होता। तो बस मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा था कि दिक्कत वगैरह कुछ है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ दिक्कत है, और ये हम्म। मशीन लर्निंग वगैरह ये थोड़ा सा रैम और ये हाँ तो सीपीयू ज्यादा खाती है तो। देखिए, अगर आप किसी एक जगह पर रह के काम करने वाले अगर हो ना, हम्म, जैसे कि आपको लगता है कि जैसे आप अभी गांव में हो तो लग रहा है कि हम्म, अभी तो वैसा कोई बहुत मेजर मूव नहीं करना है कहीं पर, हम्म, तो आप अपना घर पे भी सेटअप कर सकते हो। ये मतलब थोड़ा सा काफी आपको रेट सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर आप असेंबल कर लोगे ना घर पे, हम्म, मदरबोर्ड वगैरह लगा के उसको, नेट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे ना कि हाउ हम्म, टू सेटअप डेस्कटॉप फॉर डीप लर्निंग, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा उसमें प्लान मिल जाएगा, आइडियाज मिल जाएगा आपको उसमें से। तो उस पर अगर आप घर पे करोगे तो आप घर पे अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हो, बाद में अपग्रेड करना हुआ तो अपग्रेड कर सकते हो। तो हाँ, लेकिन लैपटॉप में लेना है तो लैपटॉप भी मिल जाएगा, बस वही है कि उसमें थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना होगा आपको। तो वैसे लंबा नहीं, डिस्कशन है ये, हम लोग हाँ, इक्विपमेंट वाले चैनल में करते हैं, उसमें अच्छा चलेगा ये ओके, डिस्कशन, क्योंकि ओके, बहुत ओके, लोग ओके। रिसेंटली खरीदे भी होंगे तो मे भी उनको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो। मैंने तो अभी बहुत दिन हो गया मेरे को खरीदे हुए एक्चुअली। मेरे हम्म, पास एक 1070 वाला है, मैंने 2017 में खरीदा था, तो उस समय तो हम्म, बहुत फास्ट था उस समय। अब जाके हम्म। अब जाके थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन उस समय फिर भी बहुत फास्ट है, मतलब काम हो जाता है उससे अभी भी। हाँ, आपका एमएसआई वाला वही। हाँ हाँ, MSI नहीं, मेरा उसका था शायद, क्या नाम है, ROG, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, क्या नाम बोलते हैं, अच्छा, एसूस का। अच्छा, आसूस, आसूस। हाँ एसूस का, हाँ उसका है। मेरा एसर का एक्चुअली। अच्छा अच्छा, हाँ सही, बढ़िया हाँ, है। चलिए ठीक ही है, फिर आप कुछ भी क्वेश्चन से पूछेगा, ठीक है। अगर हो पाएगा तो मैं हाँ, ऐसा करता हूँ आज जितना भी अभी तो जाके मैं वही लैपटॉप ठीक करने का ट्राई करूंगा अपना, उसके बाद जब फ्री हो हाँ, जाता हाँ, हूँ तो फिर कीजिए। करता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक। गुड नाइट। चलिए, हाँ, गुड नाइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल एवरीबॉडी, एंड विल मीट नेक्स्ट वीक।